So hey, good afternoon, everyone. This is Shubhankar here from Quantsapp's demo team, and thank you for joining the today's demo session. So the session for today it would be conducted by Mr. Gaurav. So he is an option trainer at Quantsapp. So he will be guiding you through some of the tools in the application and how you can use them efficiently and how it will basically how our application will enhance your options reading. So that would be like a point of discussion for today's demo session. Also, if you guys face any sorts of queries, you can post it into the chat box, and definitely Mr. Gaurav will be assisting you upon that. So, like data driven approach is what we follow at Quantsapp. So, Mr. Gaurav, he is an trainer, option trainer at Quantsapp. So he will be guiding you through like not complete, but like some of the tools in the app, giving you a crystal clear picture and exactly how the app performs. Also, make sure that all of you guys have connected to the audio, and we'll take a like small couple of minutes all just for our other participants to join the meeting, and then we'll take forward, like Mr. Gaurav will take forward the demo session from here on for today. Good afternoon, everyone. I'm Gaurav Dakate and I'm an option trainer in Quantsapp. And today we'll be looking into some of the tools, and we're gonna see how you can use those tools in a very effective way. So this is our demo session, and we conduct the daily demo session covering different topics every single day. So on a daily basis, you can join us and you can see the different tools every single day, looking into how much you can use them in a more effective way. So I'll tell a small brief about the concept. So we started 3 years back, and when we started, we had around 9 or 10 tools altogether in the application, and today we have around 48 tools, and out of which 30 is in free tools, 17 is in the premium algorithm, and one is the premium 17 is a premium tools, and one is the premium algorithm tool, that is concept option optimizer. So we have all these tools in the span of like we grown from 10 to 48 tools in the span of 3 years. So this was a small journey that concept we have seen. So today, if you guys want to know about a particular tool, we're gonna take that, uh, or I will take the session ahead. So we'll just wait for another 10-15 seconds if you guys want to have a particular tool to know like how it function and all. So you can tell,
I will definitely take that tools ahead. I will take that tool ahead. So I will be waiting for your calls. So you can put it in the chat box. You can tell the which particular tool you want to know about. So we have the request for the Straddle tool and Open Interest tool. Okay, so we got the two tools, and still, if somebody wants to know for a particular tool, they can write it up in the chat box. So Mr. Rajesh has asked for triggers. So okay, we had the three tools now: Straddle Index, triggers, and Open Interest, along with Mr. Salim had any tool how to screen scripts for day beginning. Okay, also pair trading, please. Okay, so pair trading, Mr. Salim, is altogether a very big tool. So taking that particular, so we I need to take a particular session for it. It's today it won't be possible for pair trading to have a one single tool in a altogether. So I'll try to take that particular pair trading in maybe in the next couple of session, or maybe within this week or next week. So we'll have the pair trading. So I was thinking to take the optimizer in one go. In a one session, I will tell the each and everything about the optimizer, and in one tool, in one session, I will discuss more about the pair trading. So I hope Mr. Rajesh, I did not get your point. So if you can say, please explain the edge to derive from the tools with example. So which particular tool you are talking about, or you want to know for everything? Okay, so triggers, I think you're talking about. So okay, so we have the list of tools that we are taking today. So we are taking the triggers, straddle index, then open interest, and we're gonna see the gainers and losers. So gainers and losers are the basic tool, but it has lots of things to look into, and these are the four tools that we are taking. And if we get more time, we're gonna see and talk about the volatility as well. In the last, we're gonna see about the India VIX or the IV if the time permits. So we're gonna begin our session, and we'll begin our session with the gainers and losers. So, can anyone tell me? So, if you guys can see that we are getting a lot of interaction. I'm getting a lot of interaction from you guys as well. So, one thing I want to ask you: we have seen the yesterday's budget. It was good. The market participant, the positiveness they have shown in the market, the confidence they are showing in the market from the last couple of sessions. So can anyone tell me ki how much Nifty and Bank Nifty has gained from yesterday, like from yesterday, first Feb and second Feb? Can anyone tell me?
Okay, so 4,500 points, I think Bank Nifty, 1,000 point Nifty from low. Okay, so can you tell me the like in terms of percentage gain the Nifty and Bank Nifty has gained in just couple of days? Bank Nifty 9% and okay. So I'll tell you that today I think even I don't know we're gonna see and we'll say let's say so we'll say Nifty. So the Nifty today was almost 3% up. If I see 5 days data, so from so we'll go to trading view. That will give me a better view. So there is a point with that what I'm trying to say and what I'm trying to indicate here. So just I will show you how easy it was with the help of Quantsapp that you don't have to guess or look somewhere else. You can say yesterday it was Nifty gained almost 4.7%, and today the gain was 3%. So roughly around 4 plus 3 7 plus 7.7 somewhere Nifty has gained. So this is 2.5 for today's. So Nifty 1 day gain is 2.5 and is 4. So 4 plus 6.7 around 7.3 or 2 7.3 something Nifty has gained in the period of 2 days. Now if you notice in the gainers and loser tools, Nifty today is 14,000, crossing the level of 14,700 today, closing, most importantly closing above 14,700. And you can see Nifty in the past 2 days has gained almost 7.3%, what we have seen. So we have seen this is a spot price. Obviously this is what we have seen, this is a spot price, but in the Quantsapp this will be the future price. So the Quantsapp is totally into the futures, and I can see the Bank Nifty, the Nifty has roughly gained 7.3%. Now you might be saying, ki, Gaurav, this is the, so you should be showing the today's data. Yeah, sure, I should be like, Concept should be showing the today's data. But if you have noticed, we have taken week here. So I'm trying to look into कि आज इस जो वीक हुआ है अभी तक जितना ये वीक निकला है, सो मंडे ट्यूसडे आज 2 दिन हुआ, 2 दिन में बैंक निफ्टी ने रफली अराउंड 7.3% एंड बैंक निफ्टी ने 12.2 ऑलमोस्ट 12.3% गेन किया है. सो नाउ द माय पॉइंट इज इफ आई वांट टू सी कि कितना निफ्टी बैंक निफ्टी ने गेन किया है over the period, so I can see. Now this is just a week. I'm the data I'm looking for. I'm not saying that tomorrow the data will be same, Nifty will be having a good move or not. But as of now, I can see I don't have to hustle and go to another side or looking for the online or something. Here I can say in last 2 days Nifty has gained this much, Bank Nifty has gained around itna. Now if I say that's कि 2 दिन में Tata Motors almost had a upside of 24 and half, Ashok Leyland 21, SBI 17%, Apollo Tyres 16%. So this is the gain for the last 2 days or 2 days. So now you can see that I can see in the gainer and loser tool कि 2 दिन में कितना मूवमेंट आया है या 3 दिन में कितना मूवमेंट आया है. अब मैं देखूंगा एंड आई विल ट्राई कि अब मैं कहता हूं कि इस मंथ, सो दैट्स गोइंग टू बी रिमेन सेम क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट फेब का फर्स्ट वीक है, तो वीकली और मंथली डेटा तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. नाउ लेट्स चेक द एक्सपायरी टू एक्सपायरी. एक्सपायरी टू एक्सपायरी क्या बोलता है बॉस, ये डेटा चेंज हो जाएगा क्योंकि लास्ट एक्सपायरी आई थिंक 29th ऑफ जैन को आई थी. लास्ट एक्सपायरी वाज ऑन 28th ऑफ थर्सडे 28 जैन, तो उसके बाद फ्राइडे का दिन था, तो उस दिन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ. तो ना आई कैन से कि कितना एक्सपायरी टू एक्सपायरी चेंज आया है, आई वांट टू सी दैट.
और वो मैं कैसे देखूंगा? आई विल सी, अगर मैं एक्सपायरी टू एक्सपायरी देख रहा हूं तो मतलब लास्ट एक्सपायरी कौन सी थी, जनवरी की एक्सपायरी से अभी तक, मतलब आज हो गई 2 तारीख ऑफ फेब, तो जैन की लास्ट एक्सपायरी से अभी तक कितना चेंजेस आया है निफ्टी बैंक निफ्टी में या अलग अलग एफ एन स्टॉक में. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लुकिंग इनटू जस्ट सेटलिंग द लाइक हैसल जो देते हैं, मतलब इतना सोचना पड़ता है कि बॉस कहाँ पे देखे, कितना निफ्टी या बैंक निफ्टी गेन किया है, आइडेंटिफाई करना कि एक स्टॉक कितना गेन किया है नहीं किया है. So I can do from here. So this is my point of view looking into the gainers and loser. Now we'll come to the most important, that is custom. अब custom क्या बताता है? आज मैं देखूं कि custom में ऑटोमेटिकली आज आ गई आज की डेट, तो मैं आज की डेट सकता हूँ कि निफ्टी अराउंड 2.5% और बैंक निफ्टी अराउंड 3.5% आज गेन किया है. सो दिस इज टेलिंग मी कि आज के दिन में इतना गेन है. ना इफ आई से कि मुझे देखना है कि बजट के मुझे देखना है कि लास्ट बजट इफ आई एम एज्यूम कि फेब की 1 तारीख या फेब की स्टार्टिंग में कहीं आया था, अराउंड अराउंड इवन आई डोंट नो कि कब आया है, बट इफ आई से कि फर्स्ट ऑफ फेब 20, सो इट्स टेकिंग द 31st जनवरी क्योंकि फर्स्ट को सैटरडे था. So we'll increase our period. So let's take 31st Jan क्योंकि 1 तारीख को सैटरडे था. तो नाउ आई कैन सी कि 31st Jan मतलब लास्ट जो बजट आया था वहां से लेकर अभी तक, मतलब आज के दिन तक, मतलब आज एक दिन ज्यादा हो गया बजट से, तो मैं देख रहा हूँ कि उस बजट से लेकर आज अभी तक जो बजट आया उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी ने कितना परफॉर्म किया है या अलग अलग स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लुक हियर. आई कैन से निफ्टी हैज गेन्ड ऑलमोस्ट 22% एंड बैंक निफ्टी हैज गेन्ड 11%. तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी, सॉरी. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मुझे जानना है कि किसी एक पर्टिकुलर डे से पूरे एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं उनका मुझे देखना है कि कौन सा स्टॉक कितना गेन करा है या लूज किया है, आई कैन सी फ्रॉम हियर. अगर अब मैं देखूं निफ्टी बैंक निफ्टी अपन ने देखा, आई कैन सी कि अदानी हैज गेन अराउंड 150, आइडिया 124, ऑरो फार्मा 92%, माइंट्री 92%. सो दीज आर ऑल दी स्टॉक्स, उनके अभी के जो प्राइजेस हैं वो, और नीचे दिख रहा है चेंज. तो ऑलमोस्ट बीईएल हैज गेन 51% समथिंग, डॉक्टर रेड्डी 44%. सो दिस इज गिविंग मी ना आइडिया दैट लास्ट बजट से अभी तक कितना चेंज आया. टोरेंट फार्मा ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइम था उतना ही है, बट नाउ यू कैन सी एक्सिस बैंक, हिंद पेट्रो, आईटीसी, पीएल, अब ये वो स्टॉक्स हैं जिनने लूज किया है. तो लास्ट जब बजट आया था वहां से लेकर अभी तक पीएनबी 40% गिर चुका है, आईबुल ऑलमोस्ट 28, कैन बैंक 27, आरबीएल 24, एमएनएम 24, इंडसलैंड 22.5, कोल 22, पीवीआर 20. सो ये ऐसे स्टॉक हैं जिनने लूज किया है फ्रॉम फर्स्ट और लास्ट एक्सपायरी से अभी तक. So now the main motive of gainers and losers, so it helps to identify the stocks uh, जो गेन कर रहे हैं, जो लॉस कर रहे हैं. अगर सपोज यू वांट टू सी कि आज एक हफ्ते में आई थिंक लास्ट वीक सभी दिन में निफ्टी गिरा था, बट देयर वाज स्टिल स्टॉक हु हैज गेन्ड a good amount of up movement in that particular stock. So the idea of looking into the gainers and loser is to just to see that which are those stocks who has gained and lost from a particular time, particular date. So this is an interesting tool, and if you have seen Quantsapp notification, you might see that sometimes we do say, tell you about the gainers and losers, talking about कि कौन से stocks हैं जो mostly from expiry to expiry कितना gain या loss करें, या फिर if there's a big event. So you can see that lots of data this tool provides. Now the point, so this is what helps me to just to
if I want to know कि okay कौन से stocks हैं जो gain कर रहे हैं lose कर रहे हैं, I can see it from here. So this was about from the gainers and losers, that what you can do here, what you can see. Then if you go say suppose Adani Enterprise, तब Adani Enterprise के नीचे लिखा है others. Now this others indicate ये कौन से sectors है. अभी even I don't know which others में क्या क्या आते हैं, but from this is from other. If you say idea, I can easily identify telecom. So कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई stocks ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं होता कि वो कौन से सेक्टर में है या वो किस इंडेक्स में है. So this is where you can also identify very easily. If I say just give me some name, PL, let's take UPL. It's a name, no, PFC. PFC is in power. But if I say SBI निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, और ये दो इंडेक्स में तो है, और साथ में ये पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक भी है. So now here I can also identify कि कौन से स्टॉक्स हो, जो अगर वो स्टॉक जैसे निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, या फिर then you can say कि which sector they are in. So this is what it helps you. Mr. Rajesh, sorry I can't do so. If you have something, you can write it in the chat. So this was about the gainers and losers, and if you have any question and query, you can ask here, and so we can discuss more about it. So I hope you have understood the gainers and losers, and this is not very active tool which you are looking into, but this is something which gives an a good idea that which are those stocks who has gained or lost from a particular time of period. Now, if I say that I want to see ICICI Bank, so I can say कि ICICI Bank from the from the last budget that came in January 1st Feb 2020 से लेकर अभी तक has gained only 17 or 18%. But if you see that 1 second, कि जब कोविड के टाइम पे अराउंड May somewhere, from the last budget to this budget, it has gained only 18%. But if you go to 2020 and see from April 1st, now I want to see that this particular stock. You can see ICICI Bank has gained almost 92% from the 1st April, 31st March, when it was almost on the low side. It was trading at very low price. From there, it has gained almost 92% from 1st April 2020. So this is what it helps me to look into, that how much a stock has gained from any particular period of time. I mean, any particular of time that I can do. So this was a basic tool, and even you can see that from 31st March, I think almost on 23rd or 24th March 2020, Nifty had its low of 7,500. Yeah, almost 23, 24 somewhere, Nifty had its low. And I can say from there onward, Nifty has gained almost 70 and Bank Nifty has gained 80. I don't have to go anywhere and see for anything. Just in the Quantsapp gainers and loser, I can do that particular thing as well.
So hoping that you are getting a clear significance of how you can use this tool in a more effective way, tracking the prices, looking how much a stock has gained or lost. Now we'll move to the next tool for the day, and we are taking the trap indicator. Sorry, triggers. My bad. So triggers, if I say triggers, so triggers काफी simple tool है, but it comes with lots and lots of insights. So if I say कि I think we all know about the call writers and the put writers. Like if you know, you can put yes and know something about that. So it will be easy for me to explain the whole tool and the concept in a very small period span of time. So if you know about the concept of writings, you can write yes, or if you don't, you can say no or n, as you can. So please put it on the chat, like every participant. I am looking forward. So we have the mixed answer. So many people know and many people don't know. So we'll take a small thing on in it. Okay. So the call writers and the put writers. So concept पहले देखते हैं call and put का. तो simply if I say simply if we're gonna talk very simple. So call मतलब क्या होता है? तो जब मैं कहूँ कि prices ऊपर जाने वाले. सो कॉल राइटर का डेफिनेशन ये बताता है कि आपको वो राइट देता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय समथिंग एट अ प्री डिफाइंड प्राइस एंड टाइम. सो इफ यू आर होल्डिंग अ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप एक अंडरलाइंग स्टॉक को खरीद सकते हो एट अ प्री डिफाइंड टाइम एंड प्राइस. सपोज अभी 100 रुपए का भाव चल रहा है स्टॉक का, और आपने 101 का कॉल ऑप्शन खरीदा, मतलब 101 रुपए का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदा. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक जो अभी 100 रुपए का है, आप उसको बोल रहे हैं कि आप वो खरीदेंगे 101 रुपए में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी एक्सपायरी पे 1 महीने की एक्सपायरी, तो आप 1 महीने बाद खरीदेंगे. आपने अपना भाव बता दिया 101 का, अभी स्टॉक चल रहा है 100 पे. मान लो कल को ये स्टॉक 100 से 105 हो जाता है, तो मतलब ये होगा कि आपने जो बोला था कि जो स्टॉक आप 101 पे लेंगे ना, स्टिल यू गोना पे, अभी भी आप पे करेंगे 101 रुपीज, जबकि मार्केट में उसका भाव 105 होगा. तो कॉल ऑप्शन ये बोलता है कि आप अभी भी वो स्टॉक खरीद सकते हो जो आपने प्राइस डिफाइन किया था 101 का, इवन दो प्राइस 105 हो गया. सो इससे क्या हुआ, आपको 4 रुपए का मदद मिला. मार्केट में चल रहा था 105, फिर भी आपको मिल गया 101 पे. सो दिस इज व्हाट कॉल ऑप्शन हेल्प्स यू टू लुक इनटू. And downside if I say for the put option, सेम वे, पर पुट ऑप्शन बोलता है कि आप कोई भी अंडरलाइंग स्टॉक सेल कर सकते हो. तो अब मैं सेल कब करूंगा? सेल तभी करूंगा जब मुझे चाहिए कि प्राइजेस कम हो, मतलब मैं सेल ज्यादा पे करूं. और जैसे मान लो कोई स्टॉक है 100 का, तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि मैं उसको 100 के ऊपर सेल करूं. और अगर कोई वही स्टॉक मान लो 90 पे आ गया, 100 से 90 पे आ गया, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसको अभी 90 पे बेचूं, मैं हमेशा चाहूंगा कि 90 के ऊपर बेचूं. तो पुट ऑप्शन मुझे एक राइट देता है. वो बोलता है कि ओके, कि ठीक है, पुट ऑप्शन की मदद से मुझे एक राइट मिल जाएगा कि इवन दो वो स्टॉक 90 का हो गया, फिर भी मैं उसको 100 पे बेच पाऊंगा. सो कॉल बताता है कि अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, नीचे जा रहा है तो पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं. अब इससे क्या होगा, ऊपर नीचे जाने से आपके कॉल जो
प्रीमियम है, जो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है, वो भी बढ़ेगा या कम होगा। राइटिंग में ना इसका अपोजिट हो जाता है। राइटिंग, कॉल राइटर क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता है। तो आई जस्ट टेल यू वेरी सिंपल, लाइक इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। सो अगर मैं कॉल राइट कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टॉक का भाव है ना, वो कभी ऊपर ही ना बढ़े, हमेशा नीचे जाए या उसी रेंज पे रहे, और उसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जीरो पे खत्म हो जाए। और पुट राइटर ये चाहता है कि स्टॉक का भाव ऊपर जाए और या फिर वही रह जाए। पुट राइटर ये कभी नहीं चाहेगा कि स्टॉक का भाव नीचे आए, और कॉल राइटर कभी नहीं चाहेगा कि स्टॉक का भाव ऊपर जाए। सो दिस अ सिंपल कॉन्सेप्ट, अभी आप ये समझ सकते हैं। एंड फॉर द मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे इनके डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग, शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट, या कॉल बाइंग, लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट क्या होता है। सो यू विल हैव अ गुड हैंडसम नॉलेज अबाउट दैट। सो ट्रिगर्स क्या कर रहा है ना बॉस, वो ये देख रहा है कि अगर कोई स्टॉक हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट पे है, तो वो हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट पे राइटर्स कैसा मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट में सारे जो प्राइजेस हैं वो फ्यूचर प्राइजेस हैं या ऑप्शन प्राइजेस है। सो अगर आप देखें आरती इंडिया का प्राइस ये होगा फ्यूचर प्राइस। अब कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं और देखेंगे कि आरती इंडिया का प्राइस अभी कुछ और चल रहा है, पर कॉन्सेप्ट में कुछ और है। सो वो इसीलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट में जो प्राइजेस हैं वो फ्यूचर प्राइजेस है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस, कि we do each and every calculation based on the future prices. Now we're gonna sort the data. So if I'm gonna see sort, I sorted from highest to lowest. अब इसका मतलब क्या किया मैंने, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स मतलब कि 1 सेकेंड, कि वो कौन से स्टॉक हैं जिनमें एक लाइकली मूवमेंट हो सकता है, बट आई डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा। बट आई कैन फाइंड आउट, इवन आई कैन सी दैट कि एक चांस है उसमें होने का या ना होने का। वो किस बेस में होगा, वो देख रहे हैं हम ऑप्शंस की वजह से। तो अगर आप देखें सन टीवी का भी फ्यूचर भाव चल रहा है 519 रुपए पॉइंट 85 पैसा। लगभग लगभग ये 520 पे है, लगभग मैं कह सकता हूँ। और 520 पे जो स्ट्राइक है, 520 का जो सन टीवी का स्ट्राइक है, वो हाईएस्ट कॉल है। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक्स हैं वो उसकी हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट है। मैंने क्या किया, मैंने कॉल से डेटा सॉर्ट किया, और मैंने देखा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट पे। तो जो ये ग्रीन कलर्स हैं वो बताते हैं कि अगर आपका डिफरेंस ऑफ फ्यूचर प्राइस और हाईएस्ट कॉल 0 से 2% के बीच में, तो वो डिफरेंस ग्रीन में। तो मैं देखूं सन टीवी 519, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 520 पे है, और 520 पे ही हाईएस्ट कॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 270% से कॉल इंक्रीज हुआ है, कॉल राइटर्स ने पोजीशन इंक्रीज करा है। इंक्रीज इन ओ आई, चेंज इन ओ आई बाय ऑलमोस्ट 270%। दिस शोज द कॉन्फिडेंस कि कॉल राइटर्स ये बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक का भाव ऊपर ना जाए। तो सिंपल आई कैन से सन टीवी खड़ा है 519.85 पे, 520 पे हाईएस्ट कॉल है, और यहाँ पे कॉल राइटर्स पोजीशन सेट कर रहे हैं, विच गिव्स मी a क्लियर आइडिया कि यहाँ पे कॉल राइटर्स नहीं चाहते, दे आर शोइंग सो मच कॉन्फिडेंस कि प्राइजेस और इसके भाव ऊपर जाए। सो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स मी टू फिगर आउट कि अभी वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट पे हैं। फिर उसके बाद देखने में कि अगर मैं कोई बेट लगाना चाहता हूँ उस स्टॉक या इंडेक्स में, या कोई भी स्टॉक हो, तो उस लेवल पे अगर वो हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट पे है, तो वहां पे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। अब मैं देखें, सो लेट्स टेक अनदर,
call unwinding, there's no shading. So there's one सन फार्मा. सन फार्मा का भाव चल रहा है 607 पे फ्यूचर भाव, एंड 600 इसका हाईएस्ट कॉल है. तो मतलब सन फार्मा का जो फ्यूचर प्राइस है वो हाईएस्ट कॉल के ऊपर है. मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आज मतलब चेंज इन हुआ है आज के दिन में लगभग 28% से ओआई शेड हुआ है. मतलब कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन निकाली है, और कॉल राइटर्स से जो अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं मतलब उनको यहाँ पे डर लग रहा है इस लेवल पे कि भाव शायद और ऊपर जा सकता है. अगर भाव ऊपर जाएगा तो कॉल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब कॉल राइटर्स को नुकसान होगा. सो मैं देख सकता हूँ कॉल राइटर्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो उनको डर लग रहा है, इसलिए वो अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, और ऑलमोस्ट 28% आज पोजीशन निकल गई हाईएस्ट कॉल पे. सो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स मी कि टू आइडेंटिफाई जो स्टॉक्स अभी हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट पे है, और उस लेवल पे कॉल राइटर्स क्या भी मूवमेंट दे रहे हैं. सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम राज दीक्षित. सो 520 we have taken Sun TV. Okay, so if I'm looking from the call side, so Mr. Raj has question. So 520 would be support or resistance. Okay, so if I'm looking through call writers or call perspective, then it will be my resistance level. तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि ऊपर से जो आपको रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने के लिए, एंड सपोर्ट बताता है कि आपको नीचे से सपोर्ट मिल रहा है. तो रेजिस्टेंस वो हुआ जो मेरे को ऊपर जाने से रोक रहा है, तो 520 विद माय इमीडिएट रेजिस्टेंस. नाउ आई एम गोना सी. सो आई थिंक ये डिफरेंट कॉल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे कॉल राइटर का मूवमेंट है हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट पे. सो वी आर मोर कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स लुकिंग कि जो स्टॉक अभी देयर हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट पे है, और उस एक पर्टिकुलर लेवल पे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स कैसा मूवमेंट दे रहे हैं. Sorry guys, there was some issues. I think there was some mic issue that went. Okay. So Mr. Rajesh has if call writers decreasing and same time put OI increase, it is more effective. Yes, you can say so. Call writers अगर positions निकाल रहे हैं मतलब उनको डर लग रहा है कि stock prices might go up, and same time अगर put addition हो रहा है मतलब put writers are adding more position which is giving more support at that particular level. So even I'll show you the Nifty open interest of Nifty's today's open interest. तो वहां पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि कॉल राइटर्स पोजीशंस निकाल रहे थे, एंड पुट राइटर्स उन्हीं पोजीशन पे नया सपोर्ट बिल्ट अप कर रहे थे, and the OI band was actually shifting on the higher side. So this is what we saw today. Now I'm gonna see and look through in terms of the put side. सो पुट राइटर क्या बताते हैं. सो पहले बेसिकली पुट तो ये बोलता है कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो भाई पुट वालों को फायदा होगा. बट वी आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ पुट राइटर्स, मतलब जो पुट को सेल कर रहे हैं, और पुट सेल कर रहे हैं मतलब ये बता रहा है कि पुट राइटर्स चाहते हैं कि प्राइजेस ऊपर जाएं, क्योंकि अगर प्राइजेस ऊपर जाएंगे तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा, जिससे वजह से उनको फायदा होगा. So Mr. Vikas, so this data don't get updated in every second, but we have the 5-minute snapshot data. So this data will get updated in every 5 minutes. Now I want to see, and I want to, if we see Bank Nifty, we have the Bank Nifty. Bank Nifty का भाव चल रहा है 34,444 रुपए फ्यूचर में, और स्ट्राइक है 34,000 पे.
अराउंड अराउंड 400 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी हाईएस्ट पुट के. बट अगर आप यहाँ देखें, पुट एडिशन जो हुआ है वो लगभग लगभग 1300% से हुआ है. सो यू कैन इमेजिन फॉर द एक्सपायरी ऑफ 25th कितनी ज्यादा अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं पुट राइटर्स. जो आई एम लुकिंग फ्रॉम द पुट साइड, सो पुट राइटर्स का कितना ज्यादा अग्रेसिव है. दे आर एडिंग मोर पोजीशन फ्रॉम द डाउन साइड. They are providing more support at the lower ground from the lower side. ICICI Prudential ये तो नीचे आ गया. सो ICICI जनरल इंश्योरेंस 1400 का ऑलमोस्ट 1399 का भाव है. और एक्चुअली ये स्टॉक फ्यूचर प्राइस इसका हाईएस्ट पुट के नीचे आ गया है. हाईएस्ट पुट के नीचे आने के बाद भी यहाँ पे पीपल पुट राइटर्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन टर्म्स ऑफ पुट राइटर्स आर स्टिल एडिंग पोजीशन. आज के दिन यहाँ पे लगभग 50% से ज्यादा में पुट एडिशन हुआ है. सो आई कैन सी कि यहाँ पे पुट राइटर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इनटू इट. So just I'm looking for some unwinding side if there's something which happened on the unwinding. So we don't. So put writers काफी ज़्यादा अपनी position बना रहे हैं. And this is for the expiry of for the monthly expiry. So monthly expiry have a lot of time. So market participants generally take this a long period of time. And so always keep checking on the open interest data, that how the open interest is changing and how the participants are looking into, because this is something that open interest might change in every it's going to change every second, and in Quantsapp we're going to see change in every 5 minutes. But more precisely, you can see that how the whole band is shifting, whether it's shifting from the lower to upper side or upper to lower side, whether there's an addition or is it OI shading happening in the highest call highest put, if the stock is the near to that particular level. So Mr. Vikas, what time frame chart, okay, we use to plan trade if price near highest call? So that to depend on lots of different things. So even I can't say ki at what particular time, but here you can analyze that how the writers are doing that particular behavior, which gives in a very good insight that how market participants are looking, and if you are keeping up with them with the setting up a trade accordingly, you will be in a good position. So this was about the triggers, and as I said, it's a small tool, but it provides a lots and lots of information to look into. It gives you a good significance of how the unwinding or addition that is going through in the call side or the put side on their highest call and highest put. अगर highest call पे पुट राइटर्स पोजीशन ऐड कर रहे हैं, मीनिंग दैट दे आर मोर कॉन्फिडेंट. पर अगर अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं तो दे आर लिटिल nervous that particular stock might go up. That's why the call writers are reducing their position. If I say that put side, तो put writers चाहते हैं कि prices ऊपर जाए, और अगर put writers अपनी position निकाल रहे हैं मतलब वो भी इन्हें डर लग रहा है, तो they are still into that fear that prices might come down, and put writers are adding more positions into it. You can see that they are more towards into side of that this stock might not go below that particular level, or it won't go too much deep into it. So this was the option triggers. I hope you have understood, and if you have understood this, you can give your feedback in the chat box or in the comment section. So we can move to the next tool, or if you have any particular question about it, you can also ask.
So how much present OI change in highest call or high put for confirmation, and which time is best for the option. So Mr. That there's no particular uh, change in highest call and highest put. So it gives me a significant idea. So even say, suppose uh, let's take a small example. If I say कि यार let's take कि अपन night ride में चलते हैं, just example which मेरे just that came in my mind. So if I say कि चलो night ride पे चलते हैं and we are a people of 100, suppose, like let's take a people of 10, so we have a group of 10. तो 10 में से 7 लोग बोलते हैं यार नहीं हम तो नहीं जाएंगे, एंड वो लोग अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं. अगर 10 में से 7 लोग निकल गए तो इट गिव्स मी एन आइडिया कि ओके बहुत से लोग तो निकल गए, मतलब कुछ ना कुछ तो उनको डर लग रहा है. एंड अगर 10 के 10 लोग खड़े हैं और उसके साथ और भी लोग आ जाते हैं टू जॉइन इनटू द ग्रुप, दैट मींस कि चलो कुछ नहीं होगा, इट्स फ्री टू गो, सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट. So there's no particular number to look into the change in OI, highest call and highest put. You can generally see that how the confidence that is building up. If you can see Amara Raja, sorry, not Amara Raja, it's very far. One second. सन टीवी, अपन ने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे आज में 270% से इंक्रीज हुआ है. सो यू कैन सी द इंक्रीज इन दी यूआई टेल्स मी कि यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कॉल राइटर्स का. So there's no particular number to look into, but you do your own analysis and you will get to know. SBI, I don't know about SBI. SBI. So SBI में क्या हो रहा है, 332 का भाव चल रहा है और 330 पे, मतलब यहाँ पे 330 का हाईएस्ट कॉल है और फ्यूचर प्राइस ने हाईएस्ट कॉल के ऊपर चल रहा है. Now you can see यहाँ पे call writers are increasing their position, means they are showing more confidence even at the level of 330. Even though future price has crossed the highest call level, still the change in OI has increased by 15%. And if I see from the downside, 250 का काफी ज्यादा नीचे है. आई थिंक एसबीआई हैड अ गुड मूव इन द, आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग क्योंकि हाईएस्ट पुट जो है वो काफी नीचे, इट्स ऑन द लेवल ऑफ 250 और यहाँ पे थोड़ा सा ओआई शेड हुआ है. So it's just not so big in the change in OI, not so big in the change from the put side. But it's showing me that call writers are showing significant confidence in the change in OI. So you should keep this point in mind. So now we'll move to the next tool. I think we have gained a good amount of idea about the option trigger. Now we're gonna move to the open interest tool. So open interest is here. So if somebody would like to give any point on the open interest, like what is open interest and what is it about? So anyone can put their views on the open interest.
Okay, so we'll start this tool open interest. So open interest क्या बताता है कि अभी yes, Mr. Rajesh has said it is a total number of active contracts open in the market. Correct. So we see open interest in terms of writers. So we are looking ki that the sellers of the contracts that are call or the put, how they are looking into. So as we have seen the triggers, तो triggers में ये देखा था कि कैसे open interest shift हो रहा है, sorry, open interest build हो रहा है या shading हो रही है. Same way here I'm also looking into it कि कैसे किसी एक सिंबल मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मे बी इट कुड बी अ निफ्टी, बैंक निफ्टी, और मे बी एनी स्टॉक, हर एक स्ट्राइक पे कैसा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है या शेड हो रहा है. So this is the new UI we have introduced, and this gives a I would say the aerial view, bird view of the whole strikes of a particular stock. If I take the Nifty, तो निफ्टी का मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कैसे हाउ मच ओपन इंटरेस्ट हैज बीन what the open interest. So if I want to say कि कहीं पे open interest कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, that I can do here with easily. This new particular UI function is telling me, so suppose, so I'll just give a first small brief about the UI. So if you can see here, this part, let's take, just give me a second. I'm just finding out a perfect bar for you so we can have a great look into it. So let's take this one. तो 14,600 का स्ट्राइक है निफ्टी का. निफ्टी में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे यहाँ तक जो ग्रीन लाइन है, ये जो हल्की सी जो डार्क ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन इस बार की, जूम इन, इस बार की ग्रीन लाइन है. ये ग्रीन लाइन मुझे बताती है कि अभी मतलब आज सुबह तक कैसा ओआई था, कितना ओआई था. और ये जो चमकती हुई जो ग्रीन लाइन दिखा रही है, ये बता रही है यहाँ पे और कॉल एडिशन हुआ है. सो आई कैन से कि 14,000, इफ यू लुक हियर कि 14,500 से लेकर नीचे तक हर ग्रीन बार में एक ऐसा गैप सा दिख रहा है. तो ये बताता है कि आज सुबह कॉल काफी ज्यादा थे, कॉल राइटर्स थे यहाँ पे, पर ये कॉल राइटिंग कम हो गई है. यहाँ पे हर एक नीचे नीचे साइड में यू कैन सी, ये तो काफी बड़ी बार थी 14,200 पे. आप देख सकते हैं कि कॉल कॉन्ट्रैक्ट अभी प्रेजेंट है 14,200 पे, 4,08,900, और आज के दिन में 17,09,000 शेयर्स इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से कम हुए. इट्स गिविंग मी ना बर्ड व्यू कि नीचे साइड से कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, आई कैन से, और ऊपर साइड से कॉल एडिशन हो रहे हैं. तो जितने भी कॉल राइटर्स नीचे खड़े हुए थे, कॉल राइटर्स सब अपनी पोजीशन ऊपर लेके जा चुके हैं. आई कैन क्लियर सी कि अगर इफ मुझे ये गैप दिखता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉल अनवाइंड हुआ है, मतलब कॉल राइटर्स ने पोजीशन हटाई है. और ग्रीन ऐसे चमकता हुआ दिखता है तो मुझे पता चल जाता है कि ओके, कि यहाँ पे कॉल एडिशन हुआ है. सो इट्स गिविंग मी अ परफेक्ट एरियल व्यू, बर्ड व्यू बताने के लिए कि नीचे से कॉल राइटर्स ऊपर शिफ्ट हो गए. नाउ आई एम गोना सी फॉर द पुट राइटर्स. अगर आप देखें तो वन सेकेंड. अगर मैं नीचे से देखूं, अगर 13,700, 13,550, तो यहाँ पे जितने भी पुट राइटर्स थे, मतलब जो नीचे से सपोर्ट दे रहे थे पुट राइटर्स, यहाँ पे भी देखो 12,000, आई थिंक 13,000 का जो स्ट्राइक है, यहाँ पे 21,42,000 लगभग पुट पोजीशंस खड़ी हुई थी. पर देख सकते हो यहाँ पे 15 लाख, आज के दिन में 15 लाख, तो मतलब अभी 21 लाख खड़ी हुई है पोजीशंस. उसमें से सो टोटल आई थिंक 21 प्लस 15 कितना हुआ, 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे. अभी खड़े यहाँ पे 21 लाख, और 15 लाख
लगभग लगभग 15.5 लाख शेयर्स, मतलब यहाँ पे जो सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ, सो दिस जो नंबर आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है, दिस इज द इन टर्म्स ऑफ शेयर्स. सो 13,000 पे मैं देखूं यहाँ पे जो गैप बना है, इट टेल्स मी कि यहाँ पे काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है पुट्स की. और आप देखें तो इस लेवल पे पूरा अनवाइंड हो रहा है. सो इज गिविंग मी कि एरियल व्यू कि जितने भी नीचे के पुट राइटर्स थे उनने अपनी ऊपर पोजीशंस बनाई है. यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा पुट पोजीशंस इंक्रीज हुई है. कॉल राइटर्स जो ऊपर थे अब वो भी और ऊपर शिफ्ट हो गए. मतलब राइटर्स जो हैं, पुट राइटर्स हो कॉल राइटर्स हो, वो ऊपर शिफ्ट हो गए. इज गिविंग मी a good aerial view of looking into this data. So this was about the this particular UI that we have bought up here, and this, trust me, this gives me the aerial view. एक झटके में पता चलता है कि कहाँ पे unwinding हो रही है और कहाँ पे addition हो रहा है for the whole. So this was about the Nifty. Now we'll move into the graph side. So I think किसी ने क्वेश्चन ये पूछा भी था कि अगर कॉल अनवाइंड हो रहा है, पुट एडिशन हो रहा है, तो वेदर इट विल बी सिग्निफिकेंट और नॉट. सो आज देखते हैं. सो इफ आई से आई विल, मैं देख रहा हूँ अब डेटा विल चेंज फ्रॉम 2nd ऑफ फेब 10 बजे से क्या मार्केट में, मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है. So we are doing the simple analysis, looking into the how the data has changed from a particular time to time. So now if I say मेरा ये निफ्टी का open interest है, this is my nifty open interest, and this is tells me the higher call writer. So green is indicating call side, red is indicating put side, and this is the open interest. मैं यहाँ पे हर एक लेवल पे देख सकता हूँ कि if I suppose I want to see, so जो बड़ा बार है वो मेरा रेजिस्टेंस है. So अराउंड 15,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल हुआ है, अराउंड अराउंड 43 लाख शेयर्स का. सो दिस इज माय हाईएस्ट रेजिस्टेंस, दिस इज माय द रेजिस्टेंस लेवल. एंड अगर मैं नीचे से देखूं तो 14,500, 14,000, 13,500. सो ये मेरे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं जो अभी मैं देख रहा हूँ. ये डेटा will change in every 5 minutes in the concept, or otherwise change in every minute or something. So data जो highest call है, highest put है, ये सब change हो रहेगा. मार्केट पार्टिसिपेंट एज इन मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे बेट्स बनाएंगे उस हिसाब से ही चेंज होगा. सो दिस इज व्हाट इट टेल्स मी मेरा फेयर प्राइस. सो फेयर प्राइस क्या होता है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एक्सपायरी है 4th ऑफ February की. सो दिस इज अ वीकली एक्सपायरी. अब वीकली एक्सपायरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, तो अब इसमें क्या करें बॉस. तो what we have tried do, we have tried calculate the fair price. fair price कैसे निकालते हैं, at the money strike plus at the money option premium, call option premium, and then उस माइनस करेंगे at the money put option premium. So it's going to give me my fair price of this particular symbol. Now we have seen the open interest side कि देखा highest call मेरा कहाँ पे, highest put कहाँ पे है, और ये मेरे multiple resistance और support level मैं कैसे देख सकता हूँ. Now if I go to the open interest chart, change in open interest, तो मैं देख रहा हूँ कि आज 2 तारीख है 11 बजे से. सो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम से देखना है, कल मैं देखता हूँ, कल आई थिंक 1 बजे से देखता हूँ कि कैसा डेटा चेंज हुआ है. आई थिंक पोस्ट बजट 1 बजे तक आई थिंक बजट खत्म हो गया था. मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद से डेटा कैसे चेंज हुआ है. तो उसके बाद से आई कैन सी दैट जो कॉल राइटर्स थे, you can see a lot of unwinding that has happened on the lower side, और ये डेटा पूरा ऊपर ऊपर शिफ्ट हो गया है. put writers has also increased the level here. So it's giving me an idea that जो call writers थे उनको डर लग रहा था कि that my possibility की prices ऊपर जा सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने positions निकाली और ऊपर साइड शिफ्ट कर दी. So I can see how the fear and how market participants do change their positions
कि मुझे कैसे पता चलेगा कि whether they are feeling nervous or they are whether they are very confident. अगर मैं आज 10 बजे से देखूं तो काफी ज्यादा पुट अनवाइंडिंग हुई है, मतलब पुट कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा अनवाइंड हुए हैं और न्यू पुट पोजीशंस यहाँ बनी है। कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है पर मार्जिनली हुई है, अराउंड आई थिंक 14,000 के ऑप्शन पे 3,72,000 से शेयर्स कम हुए, और ये कॉल एडिशंस ऊपर साइड हो रहा है, मतलब ये बैंड थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, दिस इज अ गुड साइन। So I can see, I can analyze with the open interest how the writers are doing, what they are looking into, whether they are increasing their position or decreasing their position. So I hope this is clear with it, that how you can use this particular tool, how you can use the open interest, change in open interest, looking into the confidence and the nervousness of the uh, market participants. So if I talk about the features that you can see here, सो पहले तो आप यहाँ पे कोई भी एफ स्टॉक ले सकते हैं। सो इफ आई से अदानी इंटरप्राइज, सो ये अदानी इंटरप्राइज का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। डेट जैसे हमने देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइम से हम चेंज कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ कि मुझे देखना है या मुझे जानना है कि कल बजट आने के बाद कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, कैसे शिफ्ट हुआ है ओपन इंटरेस्ट, मतलब राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं और दे आर एडिंग मोर पोजीशन, सो आई कैन सी फ्रॉम हियर। देन द एक्सपायरी लेवल दैट आई कैन सिलेक्ट, देन देयर इज अ ग्राफ। सो दिस ग्राफ आई विल जस्ट टेक यू। तो सपोज मुझे इसका प्राइस ग्राफ देखना है तो मैं उस वहां पे जो ग्राफ पोर्शन था उस पर क्लिक करूंगा। नाउ आई कैन सी द ग्राफ। सो दिस इज द फ्यूचर प्राइसेस, सॉरी, so this is the future price, so you can see the rolling data, so the rolling future, and नीचे उसके आप देख सकते हैं कि open interest कैसा है, whether open interest is building or not. So this was the one more feature we have added, कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे चार्ट में डायरेक्टली जंप कर सकते हो to look into the prices and the open interest. Then if we have seen the from date, then this is a setting tools where you can see whether only call, or if you want to see both put or both, you can see some. Then strike wise PCR, this is very good, this is also very good. We're going to look for the Nifty only, so we are not getting into the PCR right now. So you can see कि किस लेवल पे कितना PCR है, मतलब if I say PCR of 1.77, let's say from here, तो PCR बोलता है कि अगर एक कॉल राइटर्स के सामने कितने पुट राइटर्स खड़े। तो अगर मैं बोलूं तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो 14,500 पे लेता हूँ, तो 14,500 पे पीसीआर है 1.78। तो पीसीआर क्या होता है, पुट अपॉन पुट डिवाइडेड बाय कॉल रेशियो, मतलब पुट अगर मेरे 178 है तो उसके सामने कॉल मेरे 100 ही है, तो पुट ज्यादा है एज कंपेयर द पुट कॉल। सो दिस इज व्हाट पीसीआर हेल्प्स मी। Then the different chart view we saw. Then you have the table view. So table view where you can see the open interest, change in open interest, हर एक स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, यू कैन सी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये बताता है कि कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। अगर कॉल में इफ यू से, तो कॉल में ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का से एक माइनस साइन में बताता है जो कॉल कॉल ओआई कम हुआ है या पुट ओआई कम हुआ है या इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। So this is about the open interest tool, how you can see. Then you can also see the lot size here, कि एक स्टॉक का लॉट साइज कितना है या इंडेक्स का लॉट साइज कितना है। So I am hoping that you आपको ये समझ में आया होगा open interest tool, and if you have any question you can ask or we'll jump to the next tool.
So, Mr. Vikas, my name is Gaurav Dakate, and in Quantsapp, I'm an option trainer. So, you can see a lot of videos of like basics of options in the YouTube of Quantsapp, where you can find me. And thank you so much for the compliment. So I'm hoping that we all have the clear picture about the how we can use the open interest tool, what we can see, how we can customize a date to look a particular change in open interest from a particular time to particular till now. So now we'll move to the next tool, and the next tool we are taking. So I think somebody told Straddle tool. So a Straddle tool is very simple and so you like somebody have a point on Straddle, like what is Straddle? If somebody can tell me. So Straddle is a option strategy. So Straddle will talk about. So Straddle क्या होता है? Straddle होता है एक option strategy है जहाँ पे you either buy both call and put of a particular stock या index और एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का। तो जैसे मान लो अभी निफ्टी की स्ट्राइक चल रही है 11,650। आई थिंक ये एट द मनी इसलिए ब्लैक में सिग्निफिकेंट है। ये एट द मनी 1460 का स्ट्राइक है। सो इफ आई वांट टू सी कि कॉल प्राइस और पुट प्राइस दोनों क्या है एंड व्हाट इज द मूवमेंट इन दो पर्टिकुलर थिंग, तो आई कैन दैट पर्टिकुलर थिंग आई कैन लुक फ्रॉम हियर कि अगर एक स्ट्राइक है 14,650, तो अगर मुझे उसमें स्ट्रेडल बिठाना है तो उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है। एंड सपोज आई वांट टू ट्रैक दी स्ट्रेडल प्राइजेस। इफ आई वांट टू ट्रैक दी स्ट्रेडल प्राइजेस आई कैन सी स्ट्रेडल का आज जो एंड हुआ वो प्राइस था 200 रुपए और आज इट हैज लॉस्ट अराउंड 211 रुपए। नाउ द स्ट्रेडल में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो होता है आईवी। तो स्ट्रेडल बोलता है कि स्ट्रेडल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मूवमेंट इनटू इट। लाइक अगर तो स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आपको मूवमेंट चाहिए एटलीस्ट एंड एटलीस्ट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट यू आर गिविंग। सो जितना अपना अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे रहे हैं कम से कम उतना मूवमेंट आना चाहिए। सो दैट्स वेयर द स्ट्रेडल बिकम मोर इफेक्टिव। या फिर आईवी काफी ज्यादा चेंज होनी चाहिए। अगर आप आईवी काफी ज्यादा चेंज होगी देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आईवी इंक्रीज होती है तो डायरेक्टली अफेक्ट करती है कॉल एंड पुट को। सो इफ आई से कि अगर यहाँ पे आईवी काफी ज्यादा से चेंज हो जाएगी तो कॉल एंड पुट दोनों के प्राइसेस बढ़ेंगे अगर आईवी बढ़ रही है। एंड अगर स्टॉक के आईवी कम हो रही है तो कॉल एंड पुट का भी प्राइसेस कम होंगे। So now I'm gonna see into the chart section. So this was just a small straddle index where you can see the call and put prices, उनमें कितना change आया है, straddle का price क्या है, change क्या है, and IV. Now we'll go to the chart section. We'll go to the strategy chart. We'll create a strategy here, a custom strategy. We'll give name as I don't know. So we're gonna add likes options 14,600
we are buying put option. Sorry. So this is a straddle we made here. Now in the chart, I can analyze how the, one second. So you can sell the straddle, buy the straddle as well. If you're buying a straddle, then you're buying both call and put. So if you want me to make it into the selling part, we'll do so. One second. Go back. So this is my strategy. I'm gonna sell the straddle. So rather than buying it, we're gonna sell it. So this is my short straddle 11,000 sorry 14,600 का. So now you can see आज 14,600 sorry where is the price, 2nd Feb. So started at around 350 के आसपास का इसका प्राइस था जब मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ 250 240 पे समथिंग एंड इट वेंट टू 210. तो 40 रुपए का इसमें कुछ फायदा हुआ था आज के शॉर्ट स्ट्रैडल में. बट यू कैन सी कि फैब का स्टार्टिंग 960 से ऑलमोस्ट स्ट्रैडल वेंट टू 200. तो short straddle you can see the how the prices are moving and in the graph. Then you can add a lots of indicator here. So if you press Q, so the Q is the concept algorithm where you can see the delta, gamma, theta on price, and vega. So you can also see the option Greeks of all these of any strategy. I think it's in the loading. It's loading. So then you can see the option Greeks of all these strikes. So Mr. Rajesh, the edge of this particular tool was that where you can see the impact of the movement that the straddle is having. So suppose if you are want to looking into a particular straddle, you want to know the how the prices are changing for then any particular stock or of a particular straddle of any stock or index, and you want to see how the IV is impacting. So when you're buying and selling, so you're more interested looking into either the stock had the good movement along with the IV, then the prices are going to be in the stable position. And if you find that even though there was a good amount of movement, but there was the IV declined, so you can see the impact of IV that straddle is having. So agar IV काफी ज़्यादा impact हो रहा है, so you will be going to know that whether you that strategy, that whether that particular straddle is in a profit or in loss, how much movement that straddle is having. So that is what it helps in. I think I have to refresh it again. So that was the so for if you are taking any decision, you can even go to the chart section where you can see the use. So if you are going to the charts, you can utilize more of Greeks. You can see the modes of indicators, and you can analyze how the Greeks are doing into it. So you have the option of chart as well of looking into it. Mr. Salim, straddle of future or spot ATM? Straddle of future or spot ATM? I did not get your point, Mr. Salim.
Okay. So future price is different than 1 second. So future pricing different than spot prices, correct? Which one we should you chase? So I usually see the future price over the spot price when doing the options, and I tell you the reason for that. That when you so future price get compounded with like it adjust your um dividend yield risk free return, which is not being indicated in the spot price. So I usually take the future price. So this was about the today's session. And if you have any particular more questions, you can contact to the your advisors in the Quantsapp, or you can also reach us on the support at the rate concept. And this is was the demo video we had today, demo session we had today. And we also have introduced a lots of basics of options derivatives, where you can in the YouTube, where you can learn more in detail of options like basics, what is called put, long, short, how the payoff is, what the different scenario, how the different IV and days to maturity affect all the in the payoff of calls and put. In there you can see a lot of things. You can actually start learning a lot of the options from the basics. And in the few near future you're gonna have more and more detail of the videos on the options. So do follow on the YouTube. And this demo is also this demo session is also live in the YouTube, where you can where you can see a lot of interesting videos on the. So you can follow us on the YouTube. And for this particular demo session you can come leave your valuable feedbacks into the YouTube comment section, where we have the more motivation to grow. And you can also provide your honest review on the Google Play Store or the iOS App Store, which will help us to grow and more and more. And thank you, Mr. Rajesh, for the your compliment. So you can, Mr. Rajesh or Vikas, Mr. Vikas, you can put your valuable feedback on the YouTube. So if you go to the Quantsapp, you can subscribe. You can the bell icon for the most of the videos. And you can also leave your valuable feedback into the comment section, so which will help us to grow more and more. And we have this demo section session on the regular basis, so you can also join us on a daily basis. And thank you so much for having giving a good interaction today. And thank you so much for the spending your time with me for an 1.5 hour. I hope you all have learned something from this session. You have learned how you can use the concept tool and look into the data. So we are more into the data analysis. You can see how you can see the data in a more good way.
So what really happened? So I usually take what client asks. So if somebody, if there's lots of demand, suppose. So we had a symposium on the last month, 23rd and 24th. That time, most of the people have asked us for the volatility. So we have taken volatility many times. Then this is a event driven time that lots of companies are announcing their result. So we have taken lots of like event based, like what, how you can look into the IV, comparative analysis, result analysis. So it goes on. And but we try to keep new tools every single day so everyone can learn a good new tool about the concept. So it's time for signing off. For the more, you can reach to the advisors, or you can also mail us on the support@concept.com. Thank you so much everyone for the today's session.